Today we can go in detail regarding the different geographical aspect of India. The first topic is relief. We have to cover the climate, soil, minerals, different resources, resources of India. So we have to cover a vast area in this unit. In the physiography or the relief of India, again we have to go for different physiography like hilly areas, mountains, plateaus, plain area, coastal areas, islands. So even though the word is small, we want to cover a lot of area in this particular topic. Today we are going to discuss about one of the physiography of India. When we say about the physiography of India, actually, we know that India has got almost all type of physiography, major second physiographical features. दुनिया में जितना भी physiographical feature है, India has got some portion of it. That is the advantage. That is why we are stating that India is a land of diversities. We have the mountains, we have the plains, we have the plateaus, we have the desert, we have the coastlines, we have the islands. We have all these things in our land area. हमारा main land में ये सब चीज आता है. And when we say the diversity, and diversity of culture is there, diversity of physical features is there, diversity in climate is there. We have a lot of diversity. So land of diversity, when we say about the physiography, again, India, I said we have different physiographical features. That comes under the second order landform. The first order landform, we know that is one is oceanic part, another one is continental part. Again, this oceanic part and continental part has been divided into second order landforms. So mountains, plains, plateaus, ये सब चीज आएगा the second order landform. So when we say about the physiography of India, we are going to explain about this second order landforms. In India, we have the mountain area, we have the Himalayas, we have the Vindhya Satpura regions, we have the Aravalli region, we have the Western Ghats, we have the Eastern Ghats. All this comes under the mountain, but we are taking the remaining except Himalaya in other portions. So the first physiography or physiographical aspect when we say that is the northern mountain area, that is the Himalayas. From north, when we move towards the south, just south of Himalaya, we have a greater plain area. That is called the northern plain or Indo-Gangetic plain. Then again, when we move to the south, we have a plateau region that we will say it as peninsular plateau. So peninsula, I said, a land body which is being covered by water body in its three sides. So उसी जगह पे there is an elevated land. Plateau is a table-like structure. So ऐसा वाला एक table-like structure India also have. That is the peninsular plateau region. Then on the western and eastern side of this peninsula, we have the coastal plain areas. And we can add these coastal plains and islands together because most of these shows the same characteristics. But if we take it in another sense, we can say that another physiographical division of India is the islands. So within this Himalaya, we can see multiple third order landforms. इसके अंदर है. Within the northern plains, we have multiple third order landforms. So every second order landforms in India, we have multiple of
this third order landforms इसके अंदर है. So Aravalli range, when we say about that, it is actually considered as third order landform here. When we say about the Western Ghats and Eastern Ghats of India, that is also being considered as the third order landforms. That is why they are not mentioning. Based on the size, we have divided. Today, what we are going to discuss is about the Himalayas. These are the pictures of the physical features. One is Himalayan region, you can see here. Then the plain region, yahan se yahan tak. And you can see here also, its eastward extension. So the river here is Brahmaputra. Then the plateau region, peninsular plateau region, yahan se yahan tak. And on the sides, you can see the coastal landforms and islands. You can see marked here and here. And sometimes again we can divide as the desert region. That is another physiography. But when we say about the physiography of India, we don't mention this because this can be taken in considered as part of the Great Indian Plain ka extension hai. ऐसा भी explanation hai. So we don't take this as separate entity. From the physiographical map also, you can identify the same, the height based. यहाँ green color है तो height कम है, यहाँ almost थोड़ा सा brown है तो height ज़्यादा है, यहाँ white तक गया है तो height बहुत ज़्यादा है, and in the coastal plain also it is green. That shows the height is comparatively less. You can see the height here. तो यहाँ less है इसी area पे. That is how the physiography of India is divided. And today what we are going to discuss is about the greater Himalayas, the Himalayan mountain systems. When we say about Himalaya, the Himalaya extends from west. This is the western side of India, and this is eastern side of India. When we say, we can add northwest बोल सकता है to northeast. So it is stretching from west to east of 2,500 kilometers. इसका extension है. This Himalaya has extension. And width varies from 350 kilometers in the western region. That is, in this region, it is 350 kilometers. And in the eastern region, it is 150 kilometers on an average. That is the width of Himalaya. इसी जगह पे हिमालय का width है 150 kilometer on an average, and इसी जगह पे this is almost 350 kilometers. That is its width. Then when we say about the height, we know that Mount Everest, the highest peak on the Earth's surface, is existing in this Himalayas. So the height, we can say it is almost how height above 5,000 kilometers, 6,000 kilometers. वो ऐसा बोलते हैं. The highest point, we can say it is the Mount Everest region. That is almost 8,848.8 meter height में है हमारा Mount Everest. So in Himalaya, the highest point is this point, that is Mount Everest, which is having 8,848 meters of height. And the average height is almost, I said, between 5,000 and 6,000, that is 6,100 meter है इसका average height. And when we say almost 9 out of 10 highest peaks on the Earth's surface lies in this Himalaya. When we take the Himalaya only,
there are 14 peaks which has more than the height of 800 meters. कांचनगंगा है इसके साथ, माउंट K2 है, ये सब इसके अंदर ही आएगा. Then more than 7,300 मीटर के ऊपर there is 110 peaks है इसका. उतना highest point है Himalaya has. That much of bigger is the Himalaya. I said it is extending from west to east. In the western side, it extends from Nanga Parbat hoga in the western side, and in the eastern side it is Namcha Barwa in the eastern side. कल हम बोला था यहाँ एक है सुलेमान रेंज एंड हिंदुकुश रेंज है पामनोट से, तो यहाँ से इसका एक्सटेंशन वी कैन से दिस पामनोट यहाँ है, यहाँ से इसका एक्सटेंशन है तो यहाँ तक हमारा अरुणाचल प्रदेश तक इसका एक्सटेंशन है, नमजा बरवा तक. And it has the shape of crescent, that is moon. मून का ऐसा शेप है, that is crescent shape. तो इसका भी सेम है, यहाँ से ऐसा carved shape है. That is a shape of Himalaya. And it covers an area of 5.95 lakh square kilometer. It has an area of 5.95 lakh square kilometer है इसका area. And it has a age, ऐसा नहीं बोल पाएगा, इसका age ऐसा है. It starts from Cretaceous period to Cenozoic period. That means still also there is Himalaya अभी भी इसका growing stage में है. So it starts from Cretaceous period, Mesozoic era में Cretaceous period से इसका आ रहा है. This is Holocene period, recent period. Still the Himalaya is in its growing stage. That is why it is considered as the youngest fall mountain of the world. It is also known as the loftiest, that is the highest fall mountain of the world. These are the peculiarities of Himalaya. तो ऐसा एक बड़ा gigantic mass है this Himalaya is. So we want to understand how this Himalaya is formed. Himalaya consists of 3 layers here. We know that Earth has its origin from 4.6 billion years ago. Say we know that the Earth has its origin is considered as 4.6 billion years ago. उसके बाद what happened is there were one continent, that is Pangaea, and one ocean, that is Panthalassa. तो इसको क्या हो गया? Again this Pangaea as split हो गया, Gondwana land and Laurasia, 2 plate बन गया है. Again this Gondwana land and Laurasia has splitted into multiple continents. इसमें से Laurasia में एक portion था that remains there, and some portion from Gondwana land started moving towards this Laurasia. शुरू किया है इसका movement. That is 71 million years ago. इसका movement start किया है. It has moved and start colliding with this Laurasia. So that is right now it is Eurasia. Earlier it was Laurasia था. तो ऐसा गोंडवाना लैंड का एक पोर्शन आके आकर
it has started colliding with this Laurasia. तो पहले हम बोल दिया है there is a Panthalassa बोल के sea था. It has again been split into different multiple seas, and one of the oldest sea was Tethys Sea. तो ऐसा है, एक प्लेट है इधर, प्लेट बाउंड्री था इधर, यूरेशिया प्लेट बाउंड्री, और वी कैन से यूरेशिया और एशियन प्लेट बाउंड्री था इधर. इसके बीच में एक सी था, दैट इज टेथिस सी, एंड इंडियन लैंड मास. अभी कल बोला था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका पूरा पोर्शन इसी के अंदर था. वो गोंडवाना लैंड से स्प्लिट होकर यहां से मूव होकर आ रहा था. So it has started colliding with this Laurasian. इससे साथ collide करना शुरू किया. You can see here the same picture, Indian plate and Australian. And what is the matter is the Indian plate was much denser. When we studied about the plate tectonism, I told you the mass, the plate which is much denser will subside, वो नीचे जाएगा. So what happening is Indian plate is going beneath the Asian plate, ऐसा जा रहा है. Because of this same यहाँ irregularities, ये जो इन दोनों के बीच में irregularities हो रहा है. So because of collision there is irregularities formation, and this irregularities is actually the folding. The folding is happening in between these two areas. So what happened is the Tethys Sea has been replaced with this fault mountain. So what is this fault mountain? That is the Himalayas. तो ऐसा हिमालयन फॉर्मेशन हो गया है. इसमें फास्ट फोल्ड हो गया 120 to 70 million years ago. तो 70 million से शुरू हो गया है 1 million तक. And that first fold or the first mountain is known as the Greater Himalaya or the Inner Himalaya or the Himadri. 3 names है. हिमाद्री बोलने से, इनर हिमालय बोलने से, ग्रेटर हिमालय बोलने से, ये है the first one. तो there is first fold हो गया, that is Greater Himalaya. Then again the convergent movement is happening and there is the origin of second fold. Second fold बन गया. तो पहला कोलिशन जैसा उतना फोर्स नहीं है सेकंड का, फिर भी there is folding. That fold is known as the Lesser Himalaya or the Himachal. That happens between 25 to 30 million years ago. So second fold हो गया. This is Himadri, this is Himachal. And finally there is small folding बन गया है. That is actually the Shivalik or the outer Himalayas. That happens between 2 to 20 million years ago. So this is how the Himalaya has its origin. ऐसा हिमालय बन गया है. If you look, यहाँ है एक हिमालयन Greater Himalaya or Himadri. Then the second one Himachal हो गया ये, and the third one is Shivalik. This is how the Himalaya has formed. Now we can see the important points in these 3 Himalayas. So we have the Greater Himalaya, the Lesser Himalaya, and the Shivalik. ऐसा नहीं सोचना है Lesser Himalaya is Shivalik, बहुत लोगों को confusion होता है, वो ऐसा नहीं है. Lesser Himalaya is Himachal, Himachal Pradesh. We have a state,
नेम हिमाचल प्रदेश। ये कैसे हो गया? बिकॉज दैट स्टेट कम्स अंडर द हिमाचल हिमालय। तो ये हो गया। तो अभी द ग्रेटर हिमालय, its average elevation is 6100 meter above mean sea level। मीन सी लेवल के 6100 मीटर के ऊपर है इसका एवरेज एलिवेशन। सो दिस इज द loftiest Himalaya, the tallest Himalaya is at this point, greater Himalaya, and इसका average width है 25 kilometer। I said in the western side it is 350 kilometer and in the eastern side it is 150 kilometer for the entire Himalaya, but the average width of greater Himalaya is 25 kilometer, and length बोलने से यहां से शुरू होकर यहां तक है, तो ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर इसका लेंथ है। एंड इट्स पेक्युलरिटीज, इट इज लॉफ्टिएस्ट है एंड कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है इसी एरिया पे, एंड इट हैज गॉट हॉक बैक। तो ऐसा है, एक साइड में स्टीप स्लोप होगा, दूसरे साइड में जेंटल स्लोप। स्टीप स्लोप इन साउदर्न साइड एंड जेंटल स्लोप टुवर्ड्स नॉर्थर्न साइड, ये याद रखना है। दिस इज द नॉर्थर्न साइड एंड दिस इज द सदर्न साइड। सो फेसिंग वो इंडिया का मेनलैंड को जो एरिया फेस कर रहा है दैट इज कम्स अंडर दिस स्टीप स्लोप है इसी माउंटेन रेंज का। Then the important rocks is granite and gneiss overlaid by metamorphosed sediments। So this Himalayan range is actually made by granite है। Granite is the igneous rock। तो granite को बाद में metamorphosis हो गया है, so that granite has been converted to gneiss, and इसके ऊपर क्या है? sediments, that is weathered part of the rock, metamorphosed sediments है। वो gneiss से weathered होकर जो sediments है that is being overlaying this granite base। तो सबसे bottom में इसका है granite, इसके ऊपर metamorphosed area है that is gneiss, and इसके ऊपर हो गया sediment deposition। इसके अंदर I said there is more than 14 mountain range है which is more than 8000 किलोमीटर। इसमें से इंपॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, लोस्ते, मकलू एक्सेट्रा। तो इंडिया में अभी माउंट एवरेस्ट नहीं है, द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट अभी एक्चुअली इट इज नॉट इन इंडिया ना। तो कौन सी वाला होगा सबसे हाईएस्ट माउंटेन? earlier we were consider it as Mount K2, लेकिन अभी माउंट K2 और गुडविन ऑस्टिन, इसको तो बोलता था गुडविन ऑस्टिन, तो वो भी छोड़ के वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ कांचनजंगा इज द हाईएस्ट वन, 8611 मीटर, that is the highest mountain। If you look, the highest peak in this is first one Mount Everest है, second one कांचनजंगा है, then lost है मगलकु, ऐसा बहुत कुछ you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो out of 14 mostly 9 is in this greater Himalaya में है। सॉरी ये वैल्यू जो बोला हाँ वो गलती था, वो माउंट K2 का था 8611, कांचनजंगा का 85886 है इसका हाइट। So this is how the greater Himalaya is spread। Then इसके नीचे वो ग्रेटर हिमालय के नीचे है द लेसर हिमालय, लेसर हिमालय और द हिमाचल हिमालय। ये किसके होगा? इफ दिस इज द
Greater Himalaya, and this will be the Himachal, and this will be the Shivalik. So this lies between Greater Himalaya and Shivalik, the Lesser Himalaya. Its average width is 60 to 80 kilometer. And elevation पहले बोला था ग्रेटर हिमालय का 6100 था, यहाँ 3500 to 4500 है यहाँ का इसका एवरेज विड्थ. Then the ranges, major ranges in this one is Pir Panjal range, Dhauladhar range, Mussoorie range, Nagtiba range, Mahabharat, actually not in India, then lake, Mahabharat lake, ये सब आएगा इसका important ranges. तो ये इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज द कश्मीर वैली, वैली ऑफ कश्मीर. इट लाइज बिटवीन सास्कार रेंज एंड फिर पंजाल रेंज. तो सास्कार रेंज हो गया ग्रेटर हिमालय में एंड फिर पंजाल हो गया लेसर हिमालय में. इसके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देयर इज अ वैली, दैट इज द फेमस कश्मीर वैली. Valley is the lowest part. Yes, valley, but there are many important valleys in this lesser Himalaya. One is Kagra Valley, then Kagra and Kulu and Kagra, then Kathmandu Valley. ऐसा बहुत कुछ valleys है. I have given some of the names. Kashmir Valley, Kagra Valley, Kulu Valley, Kulu Manali आप तो सुना होगा. Then Kathmandu, ये सब आएगा. है ना, काठमांडू नेपाल का ना कैपिटल है ना, तो वो सब आएगा इसी रेंज के नीचे. देन द थर्ड वन, दैट इज शिवालिक रेंज. शिवालिक रेंज एक्चुअली दीज आर द रेसिडुअल हिलॉक्स बोलता है इसको. द आउटर हिमालय अभी सबसे इनर हो गया, मिडिल हो गया, then the last one, that is the outer portion. So Shivaliks are actually the outer Himalayas. It has also the horseback shape है, anticlinal crust and synclinal ऐसा, anticlinal and then synclinal valley है, वो सबका ऐसा है. horseback बोलने से इसका तो अलग है, इसका नॉर्थर्न साइड जस्ट लाइक द सेम, नॉर्थर्न साइड थोड़ा जेंटल होगा एंड सदर्न साइड थोड़ा स्टीप शेप का होगा. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो हैव द हॉर्सबैक शेप. इट आल्सो हैव ऑलमोस्ट द लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर है इसका लेंथ, एंड द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश and 15 kilometer in Arunachal Pradesh. So always Himalaya have a much width in the western side and less width in the eastern side. Steeper हो गया southern slope में and gentle हो गया in opposite side. But when in the opposite side, when it is being gentle, that area make a plain, it looks like a plain area at that region, almost plain like shape है. तो ऐसा वाला basin we will say it as dunes or dons or the dwars. अभी आप ये dunes dons dwars बोलने से आप सुना होगा Dehradun. So Dehradun comes under this area. It is comes between the Shivalik and the Himachal. उधर कैसा है, स्लॉप जेंटल है उसी एरिया पे, एंड जैसे वैली था, वैली का उतना जेंटल नहीं है, तो ऐसा था. यहाँ कैसा है, इन द सदर्न साइड इट इज जस्ट लाइक ऐसे थोड़ा स्लीप. तो ऐसा वाला बेसिन्स, फ्लैट फ्लोर बेसिन्स, वी कैन से इट एज
the dunes. That is the peculiarity of this Shivalik range. So we have Greater Himalaya, we have Lesser Himalaya, and we have the Shivalik. Along with this, we have another portion that is known as the Trans-Himalaya. Trans-Himalaya lies in the northern side of Greater Himalaya. So it is a transition zone. उधर प्लेटोइक रीजन है, वो रीजन टिबेटन प्लेटोइक रीजन है, एंड देयर इज ग्रेटर हिमालय एक साइड में, एंड यहाँ जनरल स्लोप है. इसके बाद एक प्लेटो रीजन है, दैट इज टिबेटन प्लेटो. इन दोनों के बीच में देयर आर स्मॉल अप्स एंड डाउन्स है ऐसा. दैट इज नोन एज द ट्रांस हिमालयन रीजन. It is also known as the Tibetan Himalayas because that is mostly seen in the Tibetan region. It has a length of 1000 किलोमीटर. उतना ज्यादा एक्सटेंशन नहीं है जैसे हिमालय का. हिमालय का 2500 है, इसका 1000 है. विड्थ ऑलमोस्ट 200 के ऊपर है इसका विड्थ, एंड हाइट इज 3000 मीटर. हाइट एवरेज कम है. ग्रेटर हिमालय का 6000 था, इसका आधा है, ऑलमोस्ट 3000 मीटर है. तो मेजर सास्कार रेंज, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम रेंज, ये सब एक्चुअली द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय है, as comes under the trans Himalayan zones. So this is the trans Himalayan region. If you look at this picture, you can see this area is the trans Himalayan region, then the greater Himalaya extends, पूरा यहाँ तक extension है इसका. Then lesser Himalaya का भी इसका extension इधर तक है, and discontinue यहाँ भी ऐसा शिवालिक रेंज का यहाँ डिसकंटिन्यू होके यहाँ शुरू होगा इसका शिवालिक का. ट्रांस हिमालय लेकिन यहाँ से यहाँ तक टिबेटन एरिया तक है इसका एक्सटेंशन. ये सब शुरू होता है यहाँ का एक नोट, दैट इज द पामिर नोट. इफ यू लुक एट दिस यू कैन सी द पामिर नोट रीजन. तो हिमालय यहाँ से शुरू होता है, हिंदू कुश माउंटेन रीजन यहाँ से शुरू होता है, सुलेमान रेंज यहाँ से असली में यहाँ से थोड़ा सा है ऐसे शुरू होता है, ग्रेटर हिमालय यहाँ से शुरू होता है, कुनलुन माउंटेन सिस्टम यहाँ से शुरू है, सब मर्ज होता है इसी जगह से. Then comes the Eastern Himalaya. This is relevant for us because actually when we say about the Himalayas, when we say about we are Arunachal Pradesh is Himalaya, actually it comes in Eastern Himalayan region. It consists of the tracts of Darjeeling. तो दार्जिलिंग से शुरू होकर इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है टू नॉर्थ बंगाल. यहाँ ये बांग्लादेश ये सब ने यहाँ से ये पूरा एरिया में आएगा दिस ईस्टर्न हिमालयन रीजन. यहाँ से इट कंसिस्ट ऑफ सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, भूटान है, आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, यह सब आएगा हमारा ईस्टर्न हिमालय. So it lies between Tista river in the west. You can see here the Tista river यहाँ से आ रहा है. The Tista river merges with Brahmaputra, one of the tributary ना. तो उधर से शुरू होता है and Brahmaputra river in the east. असली दिबांग बोल के और दिहांग बोल के यहाँ से आता है वो ब्रह्मपुत्र का. तो यहाँ तक इसका लेंथ है. Almost stretches a kilometer of 720 kilometers. इसी हिमालयन को we can also say it as Assam Himalayas.
अभी हिमालय को डिवाइड करने से वी कैन से पंजाब होने से पंजाब हिमालय बोलेगा, ये उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश, तो ऐसा बोल सकता है। आज द मेजर डोमिनेटिंग लैंड इज आसाम, इट इज आल्सो नोन एज द आसाम हिमालयस। तो इसका आफ्टर दिहांग गॉर्ज हिमालय टेक्स ए साउथवर्ड एक्सटेंशन। तो यहाँ दिहांग गॉर्ज है, दिहांग दैट इज वन अदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र को भी बोलता है। यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से इट विल टेक ए साउथवर्ड एक्सटेंशन, नीचे ये एक्सटेंड होके दिस विल मूव अप टू अंडमान एंड निकोबार, इसका एक्सटेंशन उधर तक है। इंडोनेशियन वो एरिया को भी कवर करके दिस विल गो अप टू अंडमान एंड निकोबार। बट व्हेन वी से अबाउट द हिमालय वी विल कंसीडर ओनली अप टू मिसो हिल्स, उसी रीजन तक कन्वर्ट करेगा। सो व्हाट आर द हिल्स हियर इन अरुणाचल? डफला, मिश्मी, मिरी, अबोर, ये सब हिल आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देन द पटकाईबम, द नागा हिल, द मिसो हिल्स, द मिकिर हिल्स, फिर गारोगाशी जयंतिया, ये तीनों एक साथ बोलता है गारोगाशी जयंतिया, ये सब हिल आएगा दिस ईस्टर्न हिमालय के अंदर। एंड द एंटायर एरिया is drained by the Brahmaputra and its tributaries। वो सेंटर पोर्शन से ब्रह्मपुत्र इसको कट के जा रहा है। Whatever its tributaries comes under the Brahmaputra, so that is the eastern Himalaya। वो डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, then पटकाईबम, नागा हिल्स मणिपुर में, यहाँ इसी रीजन में, देन मिसो हिल्स, देन गारो काशी जयंतिया हिल्स, देन मिकिर हिल्स। These are the major hills comes under the eastern Himalaya। So the I said यहाँ से यहाँ इसका extension है, southward extension है, and that is actually known as the पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय दैट इज ईस्ट, पूर्वम ईस्ट ना, तो ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल हिमालय भी इसको बोलता है। तो ये हो गया हमारा मेजर हिमालयन टाइप्स, सॉरी मेजर हिमालयस। वन इज ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालयस और हिमाचल, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, then the Shivalik or the outer Himalaya, then the Trans Himalaya, and again this Himalaya is divided into different portion, and that the major one is the Eastern Himalaya region। तो हिमालय का डिवीजन हो गया। इसके बाद we have number of passes। passes ऐसा है, अभी ये एक बड़ा माउंटेन है, इसको तो पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो क्या होगा, वी विल फाइंड दोस एरियाज विच इज कंपैरेटिवली विद लेसर हाइट। तो क्या होगा, किसी माउंटेन में कुछ जगह तो ऐसा होगा वो तो कंपैरेटिवली लेसर हाइट का होगा। तो क्या होगा, वी विल मूव गो थ्रू दिस लाइन। अभी हमारा बुमला पास है, सिला पास है, जब तवांग जाता है आप लोग सुना होगा, कैसा पास, ये तो ऐसा है माउंटेन, इन बिटवीन टू माउंटेन देयर इज अ वैली वेयर द ह्यूमंस आर यूज्ड टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर माउंटेन, दैट इज नोन एज द passes। passes because they are generally greater than, यहाँ ऐसा है। तो हिमालय भी ऐसा था, उसका जनरल हाइट हो गया ऑन एन एवरेज, इसका हाइट है बिटवीन 4000 एंड 6000 मीटर से उतना हाइट है। तो इसको तो ऐसा पूरा पार करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज द लॉफ्टिएस्ट प्लेस होगा एंड इट हैज द आइस कैप्ड एरिया भी इसके अंदर होगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस।
So man has found his way to cross these many part of the Himalayas. It includes different passes. It includes Brussels Pass and Zojila Pass in Jammu Kashmir, Bralanchala Pass, Shipkila Pass in Himachal Pradesh, Tagala, Niti Pass. You have lot of passes you will get. ये आप याद रखना है, ये सब नेम नहीं, ये तो कौन सी स्टेट पे है, नहीं ये तो कौन सी एरिया को क्रॉस करने के लिए है, इसमें दिया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. पासेस जस्ट है ऐसा जो इजिली क्रॉस करने, माउंटेन को इजिली क्रॉस करने के लिए जो वैली यूज करेगा, दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड द पासेस. So Himalaya, on a final round, we can say Himalaya is been divided into multiple parts. One is Trans-Himalayan zone. ये यहाँ से यहाँ तक है. तो Trans-Himalayan one is Ladakh mountain range, then Tibetan plateau range, then Trans-Himalaya एक छोटा सा पोर्शन हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के छोटा सा पोर्शन. We are now considering the Nepal or Bhutan. Then Trans-Himalaya का एक पोर्शन आता है सिक्किम में. When we split it, then northwestern Himalaya at this area में जम्मू कश्मीर में है, and some portion of हिमाचल प्रदेश में भी ये आता है. Then western Himalaya, you can see here, and some portion in Punjab में है, हरियाणा में है. Then the central Himalaya बीच में है, उत्तर प्रदेश में है, इसका में उत्तर प्रदेश का नॉर्थर्न पोर्शन में है. Then नेपाल, ये सब जगह में you can see its extension. Then eastern Himalaya that we have mentioned here, that is mainly in Arunachal Pradesh, and इसका southward extension आएगा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब जगहों पे इसका एक्सटेंशन है. These are some of the points regarding the Himalayas. तो इतना पॉइंट है अभी मेरे पास. You can collect more. If I get, I will also give more details. तो बेसिक चीज इतना था, समझ में आना है आपको. Regarding Himalaya only, we can discuss about the plains. By tomorrow, we can discuss about the plain, Great Indian Plain के बारे में we can discuss tomorrow. Okay. Can we stop for the day? Sir. Hello. Hello. आज का क्लास जो ना. हेलो. जियोग्राफी सर. हाँ सर. हाँ बोलिए आवाज तो क्लियर. हाँ आज का क्लास जो ना फिजियोग्राफी के बारे में है, तो ना तो कुछ जो आपका वर्ड से भी कुछ एक पैराग्राफ, जो मतलब 5-6 लाइन फिजियोग्राफी के बारे में होने से भी ठीक था. आप एक्सप्लेन तो कर दे, लेकिन बाद में हम लोग पीडीएफ पढ़ता है तो फिजियोग्राफी उसमें दिया है, रिलीफ के बारे में दिया है. एक्चुअली इट इज फिजियोग्राफी. आई विल ऐड दैट रिगार्डिंग फिजियोग्राफी ना. ओके, थैंक यू सर.